So statutory corporations are those corporations which are brought into existence by a special act which is passed in the parliament. अब आप कहेंगे सर ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से अलग कैसे? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, देयर आर very few differences because both are government enterprises, both are the departments of the government only, both are the both work or both function relates to the department only. Therefore there are not many differences, but one major difference is there, that is they have separate legal entity. These statutory corporations have separate legal entity. They are autonomous bodies. Autonomous means which function on their own, अपने आप में जो काम करते हैं. आपको एग्जांपल बताए थे, LIC is one of them. LIC, Life Insurance Corporation, is one such organization, one such statutory corporation, which आपने देखा ही होगा उनके अपने जो वो होते हैं एम्प्लॉइज होते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी नहीं होते. They are not government employees. They are not semi-government employees also. They are not private employees also. They are in between. अपने rules regulations होते हैं. In LIC और in FCI, Food Corporation of India है जैसे, that is also a statutory corporation. And DTC है, Delhi Transport Corporation. तो ये जो होते हैं, they work independently. They have their own budget. They have their own particular type of commercial activity. वो जो है on their own name, they can purchase also, right? They can do different activities from which they can generate revenue. These type of corporations are called statutory corporation. आपकी बुक में भी एग्जांपल दिए होंगे, LIC का दिया होगा, FCI फूड कॉर्पोरेशन का दिया होगा. So these corporation, government interference is very less in these type of corporations. Government does not intervene unnecessarily and too often. Rarely there will be some intervention in case of some extreme, extreme unrealistic कोई अगर चीज हो जाती है, तब जाके गवर्नमेंट कुछ इंटरवीन करती है. अदरवाइज देयर इज नो सच इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट. इवन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज वेरी लेस इन दिस टाइप ऑफ आपका स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस. इनके कुछ फीचर्स एंड मेरिट्स एज आई टोल्ड यू आर सिमिलर. फीचर्स में नंबर 1, इट इज गवर्न्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ये गवर्न होता है इन द सेंस कि वन मोर स्टूडेंट इज एंटरिंग. ओके, तो द गवर्नमेंट एक पार्लियामेंट में एक्ट पास करती है और with the consent of all the members of the parliament, then that act forms this statutory corporation. Without the act being passed, the statutory corporations cannot be formed. Statutory corporations cannot be formed. उसी act में the powers, the objective, rules, regulations, all the privileges of the corporation, everything is defined. ये जो statutory corporation है, they also enjoy the privilege of a private company. प्राइवेट कंपनी की तरह इन्हें बहुत सारी छूट भी मिलती है, बहुत सारी रिबेट्स और बहुत सारे इनको जो है जिसे हम कह सकते हैं रिलैक्सेशंस दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से. एंड दे ऑल्सो एक्ट एज गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स. तो ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के प्रिविलेज भी लेते हैं, नॉन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग प्राइवेट सेक्टर के भी प्रिविलेज लेते हैं. इसलिए they are more independent, they have more powers, they have more space to work, they have more revenue generating activities, they work in a more the second one is it is owned by the government because it is formed by government. No matter it is formed by a special act passed in the parliament, but even then it is a government undertaking. Government undertaking ही है, but with more powers, but with more autonomous powers it has. It is a separate legal entity. यानी कि LIC पे or any other statutory corporation, they can be sued in the court. They can be sued in the court of law.
उन पे केस किया जा सकता है, वो दूसरी कंपनीज पे केस कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट पे केस कर सकते हैं समटाइम्स, यू नो, व्हेन देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स। और गवर्नमेंट जो है उन पे जो है किसी तरह से लीगल मैटर्स में उन पे केस कर सकती है। some parties can case against such type of corporations because they are registered, they are passed through a special act, they are formed through a special act, and all these corporations, statutory corporations, are separate legal entities. They are in the eyes of law a separate body. Number next, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनको बहुत ज्यादा होती है, अपने फाइनेंस, अपने बजट को किस तरीके से यूज करना है, वेयर टू इन्वेस्ट, राइट, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना है, और कौन सी असेट्स खरीदनी है। दे इवन परचेज प्रॉपर्टीज हियर एंड देयर, अपने बिल्डिंग्स बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं और लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। सेल्फ गवर्नेंस ऑफ एम्प्लॉय, इसमें जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज होते हैं, दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, दे आर सेल्फ गवर्नड बाय द पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, दे हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। उनका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या जो भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती है उनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के, वो अलग अलग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। मेरिट्स में सेम चीज आएगी, देयर इज ऑपरेशनल फ्रीडम, लॉट ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम इज देयर, एंड दे एंजॉय बोथ, दे एंजॉय प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइज की जो फैसिलिटीज है वो दोनों एंजॉय करते हैं वो। ऑल्सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज मोर, जो कि उसका फीचर भी है, ऑटोनोमस एंटिटी है, सेम थिंग, एंड ऑल्सो दे फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, देखिए बहुत सारे लोग आपने देखा होगा LIC में एजेंट्स और डेवलपमेंट ऑफिसर्स एंड अदर्स उसके उसमें काम करते हैं, दे गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देयर, राइट। LIC also provide different types of loans, home loans, auto car loans, right, all these different types of uh, facilities which they provide, but it is only because they are government undertakings, they are for not for the profit motive, they are for the welfare of the society, they work for the upliftment of the society, they work for the regional balance to be maintained in our country, और लोगों को असिस्ट करने के लिए LIC does a lot of insurances, not only life insurance, other insurance also now they are into, and many of the work of banks also they are doing, right. They provide loans, they provide different loans for different things, different works, right, or even business start करने के लिए they provide loan, all this just to facilitate economic standard, economic growth of the country. But there are some limitations also, जो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इसमें ऑपरेशनल फ्रीडम होती है, that is also sometimes only in papers, there is limited operational freedom. Limited operational freedom means there are so many rules and regulations made by the government at the time of its commencement or the formation, कि sometimes it becomes very rigid. Rigid का मतलब होता है where there cannot be many changes, so rigid भी हो जाता है कई बार, and that's why it is also seen that lot of freedom is not provided to them. Political interference, corruption, red tapeism. Red tapeism, I told you, red tapeism is a word which is used in the official language, ऑफिशियल ऑफिस में और जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर कि आपका कोई काम हो एंड द फाइल कीप्स लिंगरिंग, मैनिपुलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, और कीपिंग some works pending, lot of paperwork, lot of legal formalities, all these things give rise to red tapeism, where works are delayed for personal gains and all, where works are delayed for personal gains and other things. तो ये रेड टेपिज्म हर जगह है, लोग अपना काम करवाने के लिए जो है कई तरह के डिफरेंट अनफेवरेबल इलीगल तरीके भी चुनते हैं। इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स
or the officers involved in these statutory corporations, working in these corporations, they also sometimes involve themselves in these type of activities which are not fair or legal. तो वहां पर इसका बहुत फर्क पड़ता है. Delayed decisions, decision making is because there is a hierarchy, there is a chain, there is a order. Decision कौन लेगा? ये लेंगे. You cannot decide on your own. It has to be passed by a in a general meeting, right? It is to be signed by a particular person. It has to go through different departments, right? And so many delays are there that a decision which is to be taken at the earliest sometimes delayed for a long period of time, which is not in the interest of the general public also. But in whole we talk about, then we can say that इतना भी ज़्यादा मतलब इसमें वो नहीं है. People there जो इसमें काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, but there are some those who there are some dark horses everywhere, those who neither work or not allow others to work. Apart from that, statutory corporations are doing good job, and they are providing lot of employment opportunities. They are providing lot of facilities to general public, right? उनके इंटरेस्ट के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, and hope so कि और भी अच्छे काम इसमें जो है होंगे. This is all for statutory corporation. ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है. This is statutory corporation. इसके बाद है government companies. Then there are multinational companies. Some 2-3 more topics are there. Today I will end here only up to statutory corporation. What are statutory corporations? How are they formed? What are their different features and merits? And what are the limitations? How are they different from departmental undertakings? In departmental undertakings से सिर्फ different ये इस तरीके से that they have more freedom, operational freedom. They are autonomous bodies. They enjoy privileges of both private and government companies. Also, they are separate legal entities. Less political interference is there as compared to departmental undertaking. As compared to, है उसमें भी there is also political interference, there is also government interference, but there are many things which they can decide. इनके employees जो है government employees भी नहीं होते हैं. They are not government employees. They are neither private employees. They are employees whose employment terms and conditions are governed by the statutory corporation itself. उनके अपने rules, regulations और appointment के अपने उनके जो है terms and conditions होते हैं requirement के अनुसार. So that is all for today. If you want to ask anything, you can ask. It is still in the recording process. You can also ask any problem, anything. Yes, anybody want to ask anything? No, sir. Any point?